এই ভিডিওরে আজ আমি আলোচনা করিবা +2 সেকেন্ড ইয়ার আর্টস এন্ড কমার্স র ইনফরমেশন টেকনোলজি আইটি রু সম্ভাবিত প্রশ্ন সেট আলোচনা করিবা। সেট 1 প্রশ্ন, 1 নম্বর প্রশ্ন, এক্সপ্যান্ড দ্য ফলোইং। 1 নম্বর এর আছে www ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এসএমএস শর্ট মেসেজ সার্ভিস পিপিপি পয়েন্ট টু পয়েন্ট প্রোটোকল। এটা আছে ইডি আছে, এটা ইডিআই হব, ইডিআই ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ। WAN Wide Area Network, FTP File Transfer Protocol, DHTML Dynamic Hypertext Markup Language, RDBMS Relational Database Management System, SQL Structured Query Language, DDL Data Definition Language। ओके अच्छा, तापर दिया पिला माने 2 नंबर प्रश्न अछि एमसीक्यू प्रश्न। SQL stands for उत्तर हब ऑप्शन आई होची उत्तर हब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। बी रछि C2C stand for उत्तर हब ऑप्शन आई भी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ओके परवर्ती प्रश्न डैश इज द नेम ऑफ एंटीवायरस। ऑप्शन अछि क्विक हिल, कास्परकाई, नॉर्टन, ऑल ऑफ द एबव। ओके उत्तर हब ऑल ऑफ द एबव। ओके नेटवर्क ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड इंटरनेटवर्क, इंटरनेट, MAN मैन ना लैन हला। उत्तर हबो इंटरनेट, इंटरनेट हबो। डैश इज द एग्रीगेट फंक्शन मार्क्स, मीन, काउंट, ऑल ऑफ द एबव। ओके उत्तर हबो ऑल ऑफ द एबव। डैश आर द नेटवर्क थ्रेट भाइरस, स्पैम, बोथ 1 and 2, नॉन ऑफ द एबव हला। उत्तर हबो बोथ 1 and 2। ओके परवर्ती प्रश्न which of the following not a e-commerce type B2B, C2C, B2C, none of the above। ओके उत्तर हबो none of the above। dash are the access modifiers in Java public, private, both 1 and 2, none। उत्तर हबो both 1 and 2। dash is the DML command create, select, delete, none। उत्तर हबो delete। ओके शेष प्रश्न एमसीक्यू रो डैश इज ए अनपेड टैग। ओके ऑप्शन आई अछि, एठी डबल आई ना ट्रिपल आई ना आई भी। उत्तर हबो ऑप्शन आई ई गुटाक हला, ई गुटा होची ऑप्शन आई इज ए अनपेड टैग, ऑप्शन आई हबो हला। ये गला 2 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न पिला माने दीज कोन देखो ग्रुप बी रे राइट एनी 2 ब्राउजर्स आमे सब डिस्कशन करिबा। ए जो प्रश्न सब अछि देखिनियो पिला माने हला, ए प्रश्न आमे डिस्कशन करिबा। राइट डाउन यूज ऑफ ऑर्डर बाय, व्हाट इज द यूज ऑफ नाउ, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स, व्हाट इज malware, व्हाट इज मॉडेम, डिफरेंस बिटवीन गेटवे एंड रूटर, व्हाट इज ISP, व्हाट इज B2B। तापर राइट डाउन फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, व्हाट इज GSM हला। 2 नंबर संबलित प्रश्न ए देखो पिला माने आमे आलोचना करिबा। 2 नंबर संबलित प्रश्न ए देखो। 3 नंबर प्रश्न होची राइट एनी 2 ब्राउजर्स गूगल क्रोम एवं इंटरनेट एक्सप्लोर एटसेट्रा हला। बी रछि राइट डाउन यूज ऑफ ऑर्डर बाय हला, SQL सिलेक्ट कमांड टू फेच डाटा देखि दियो पिला माने फ्रॉम माय SQL टेबल। When you select rows, the MySQL server is free to return them in any order unless you instruct it otherwise by saving how to sort the result. But you sort a result set by adding on an order by clause that names the column or columns you want to sort by। syntax देछि select हला, एटा सब syntax दे रीच पिला माने देखो हला, देखि दियो। तापर देखो अछि what is the use of now, what is the use of now, returns of the current data and time as a value of हला, year, month, date हला, एटा सब देखि दियो पिला माने। ओके तापर अछि what is database। The database is a collection of interrelated data which is used to retrieve, insert and delete the data efficiently। It is also used to organize the data in the form of a table। तापर कोन हबो ना, फॉर एग्जांपल द कॉलेज डेटाबेस ऑर्गेनाइजेस द डाटा अबाउट द एडमिन, स्टाफ, स्टूडेंट एंड फैकल्टी एटसेट्रा हला। तापर अछि यूजिंग द डेटाबेस यू कैन इजीली रिट्रीव, इंसर्ट एंड डिलीट द इंफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स। A Trojan horse is
tricky as the mythological Trojan horse it was named after. The Trojan horse at first appears as a useful software but will actually do damage once installed on your computer. Okay, তারপর ଅଛି a Trojan horse is a computer program that is hiding a virus or other potentially damaging program. Trojan horses can be included in software that you download for free or as attachment in email messages. ओके तापर अछि व्हाट इज मालवेयर 2 नंबर सम्मिलित प्रश्न देखो पिला माने आंसर क्वेश्चन आंसर malware or malicious software is any program or file that is harmful to a computer user. A malware includes computer viruses, worms, trojan horses and spyware. तापर अछि these malicious programs can perform a variety of functions including stealing, encrypting or deleting sensitive data, altering or hijacking core computing functions and monitoring users computer activity without their permission. Hala tapore chikana what is modem? Modem an acronym for modulator. Demodulator is a device that allows one computer to talk with another one over a standard telephone line. Modem act as a kind of interpreter between computer and the telephone line. Computer transmit digital data expressed as electrical impulses, whereas telephones transmit voice frequencies as analog signals. To transmit digital data, the sending modem must first modulate or encode a computer's digital signals into an analog signal that can travel over the phone line. The receiving modem must then demodulate or decode the analog signal back into digital signal recognizable to a computer. A modem transmits data in bits per second (bps), with the fastest modem transmitting at 56k kilobytes per second. Difference between gateway and router. First होची gateway router used to reconnect to dissimilar network LAN to WAN, used to connect to similar or dissimilar network LAN to LAN, WAN to MAN. In simple terms, the gateway is a network component that functions as an entry and exit point to the network system. A router is a networking component that has the ability to transport data packets between several networks by developing an overlay network. It converts the protocol of the packets from one type to another. Generally, a router functions on the third layer of the protocol and transport the packet from one system to another by exploring the internal routing tables. Gateway interprets from one packet to another by acting as endpoints of the network system. The router decides the path of the network. What is ISP? The internet connection is provided by internet service providers. A ISP is a company which lets you access internet against a nominal fee. It must be known that there is no owner of internet. The popular ISPs are Satyam, BSNL, MTNL. Okay. What is B2B? It sells its product to an intermediate buyers who then sells the product to final customer. A wholesaler places an order from a company website and after receiving the consignment sells the end product to final customer who comes to buy the product at wholesaler's retail outlet. Write down features of e-commerce. Anytime, anywhere services, cost effective, online marketing, way of information. What is GSM? Okay. First, what is GSM? GSM stands for Global System for Mobile Communication. It is a digital cellular technology used for transmitting mobile voice and data services over mobile telephones. The concept of GSM emerged from a cell-based mobile radio system at Bell Laboratories in the early 1970s. GSM is the name of standardization group established in 1982 to create a common European mobile telephone standard. GSM is the most widely accepted standard in telecommunications and it is implemented globally. GSM owns a market share of more than 70% of the world's digital cellular subscribers.
GSM was developed using digital technology. It has an ability to carry 64 kbps to 120 mbps of data rates. 4 number A, write down document structure of HTML. Each HTML document has a minimum number of tags. Here is the very least HTML code that can be called a page. Okay, এটা দেখি দিও পিলা মানে ओके कोड सब देखि दियो तापर अछि कोन तापर अछि डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच ओ गोटे बडा से हब आ गोटे बडा से स्विच एक नंबर हबो हब इज ऑपरेटेड ऑन फिजिकल लेयर व्हाइल स्विच इज ऑपरेटेड ऑन डाटा लिंक लेयर दुई नंबर हब हैव मैक्सिमम 4 or more ports while switch can have 24 to 28 ports. 3 number रे hub is a half duplex transmission mode while switch is a full duplex transmission mode. Okay, तापर अछि देखो पिला माने 4 नंबर डिफरेंस कोन हबो in hop packet filtering is not provided while in switch packet filtering is provided. 5 रे अछि hub is not an intelligent device hence it is comparatively inexpensive while switch is an intelligent device so it is expensive. Okay, तापर सी अछि देखो पिला माने प्रश्न डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ वेब ब्राउजर हला Web browser is an application software that allows us to view and explore information on the web. User can request for any web page by just entering a URL into address bar. Web browser can show text, audio, video, animation and more. It is the responsibility of a web browser to interpret text and commands content in the web page. तापर कोन अछि earlier the web browsers were text based while browsers are two types. Graphical browsers allow a retrieval of text, images, audio and video. Navigation is accomplished. Navigator and Internet Explorer are graphical browsers. Text browsers provide access to the web in text only mode. हला तापर अछि कोन तापर अछि देखो पिला माने write down impact of e-commerce on society. E-commerce helps buy and sell goods and services on the internet. देखो we offer an ideal e-commerce development to make your digital business and improve your global presence. E-commerce facilitates fundamentally the movement of goods from suppliers to customers. Here we discuss the social and economic impact of e-commerce on society and the main advantage and disadvantage. हला तापर कोन अछि देखो write down advantage of DBMS हला controls database redundancy. It can control data redundancy because it stores all the data in one single database file and that recorded data is placed in the database. Data sharing in DBMS, the authorized users of an organization can share the data among multiple users. Tapre easily maintenance. It can be easily maintainable due to the centralized nature of the database system. Reduce time. It reduces development time and maintenance need. Backup. It provides backup and recovery subsystems which create automatic backup of data from hardware and software failures and restores the data if required. Multiple user interface. It provides different types of user interfaces like graphical user interfaces, application program interfaces. Okay, ये होच पिला माने हमें आलोचना कले ग्रुप बी हैला देखो पिला माने एठी हमें 1 नंबर आलोचना कले हैला 2 नंबर भी आलोचना कले एमसीक्यू प्रश्न आलोचना कले तापर 3 नंबर होची 2 नंबर सम्मिलित प्रश्न ग्रुप बी आलोचना कले ता सहित 4 नंबर प्रश्न 3 नंबर सम्मिलित प्रश्न एडा भी सब आलोचना कले हैला 5 नंबर रहिला ग्रुप सी परवर्ती पर्याय रे हमें आलोचना करिवा what is network devices, write down any 2 devices, how to prevent computer viruses, discuss about dial-up connection, what is transaction, write down its properties, what is e-commerce, write down any 3 types of e-commerce. Okay,
ये थिला पिला माने हमर कोन ना आईटी इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी रो संभावित सेट प्रश्न सेट 1 आलोचना कले परवर्ती वीडियो रे हम सेट 2 आलोचना करबा हला आ वीडियो गुटो लाइक करो एवं जदि सीएचसी लर्निंग हुप चैनल को प्रथम थर पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु ग्रुप रो व्हाट्सएप नंबर 6371261213 सेकंड लिखि मेसेज कले म तुम सेकंड ग्रुप रे ऐड कर देबे और पिला माने बंदे उत्कल जननी।